Are you looking to crack your IELTS with a 7.5 or 8 plus band in the year 2025? If your answer is yes, then this video is especially for you, because in this video I am going to reveal some secrets or some cheat code for the IELTS in the year 2025. अगर आप भी आपकी IELTS इस साल in the year 2025 appear कर रहे हो, are you and you looking to get a good score in IELTS, then watch the video till the end. And if you haven't subscribed our channel, YouTube channel R International, like, share and subscribe. And my dear friends, I'm Deepak, your trainer. Welcome back to my YouTube channel R International. And in this video today, I'm going to reveal the secret strategy, or I would say the secret cheat code, the most important part in IELTS. Why you're not getting, or while most of the students fails in getting about 8 or 8 plus in IELTS. Most of students are getting failed to secure more than 7 in their especially writing and speaking section. So what is the reason behind that? So there are some like kind of reasons, or there are some secret tips or strategy that you have to employ while you are practicing or while you are appearing for your IELTS examination. तो आज का जो वीडियो है स्पेशली आप एंड तक बने रहिए, मैं आपको यहाँ पे सीक्रेट स्ट्रेटेजी दिखा रहा हूँ, और उनमें से द फर्स्ट थिंग इज the most important part in the year 2025, as I reveal some strategy or some secrets from the IELTS or cheat code. The first cheat code is task response is the king. I mean to say जो आपको क्वेश्चन दिया गया है आपको उसी के बारे में लिखना है. अगर आपने थोड़ा सा भी क्वेश्चन यहाँ वहां थोड़ा सा भी अगर आपकी आइडिया स्लिप हो गई, तो आप चाहे आपकी ग्रामर अच्छी है, वोकेबलरी अच्छी है या कोहेजन कोहेरेंस अच्छा है, लेकिन फिर भी यू विल नॉट बी एबल टू गेट मोर देन 5.5 और 6 इन योर IELTS राइटिंग एंड स्पीकिंग, स्पेशली इन राइटिंग. ओके, सो लेट्स टेक द एग्जांपल. मैं आपको यहाँ के एग्जांपल पे दिखाता हूँ. तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट ऑफ टास्क रिस्पॉन्स. यहाँ IELTS राइटिंग टास्क 2 में टास्क रिस्पॉन्स होगा, और टास्क 1 है वहां पे होगा टास्क अचीवमेंट. तो टास्क रिस्पॉन्स की डिस्कशन करते हैं. लेट्स चेक अबाउट द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज, सम पीपल थिंक दैट increasing the price of petrol is the best way to solve traffic and pollution problems. To what extent do you agree or disagree? ये जो आज का क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा गया है. They are asking the examiner, or the question is demanding that what is the perfect solution to reduce the traffic and pollution issues. तो यहाँ पे जो मेन थीम इज दैट द प्राइस और लाइक हाइक इन प्राइस ऑफ पेट्रोल, द इंक्रीमेंट और द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ पेट्रोल, दैट इज द मेन थीम. तो यहाँ देखते हैं इम्प्रॉपर टास्क रिस्पॉन्स, लाइक अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा स्लिप हो जाते हैं तो क्या होता है. यहाँ पे जो रिस्पॉन्स है, लेट्स चेक द रिस्पॉन्स दैट टू सॉल्व द ट्रैफिक कंजेशन गवर्नमेंट शुड इन्वेस्ट इन एक्सपांडिंग रोड नेटवर्क्स एंड बिल्डिंग मोर हाईवेज. देखिए फर्स्ट लाइन में क्या क्या जो टॉपिक है यहाँ पे पूछा गया है, like increasing the price of petrol is the best way to solve problem 1 and problem 2. तो यहाँ पे जो रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स सीधा क्या गया है कि टू सॉल्व द ट्रैफिक इश्यू. यहाँ पे मेन टॉपिक, मेन पार्ट इज नॉट अ ट्रैफिक इश्यू और अ पॉल्यूशन. द मेन टॉपिक ऑफ द essay is to increase the cost of price, cost of the fuel और cost of the petrol. तो यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन है वहीं से भी लाइक जो टास्क है, यहाँ पे जो क्वेश्चंस की डिमांड है और डिमांड फुलफिल नहीं हो रही. चेक इट अगेन. टू सॉल्व द ट्रैफिक कंजेशन गवर्नमेंट शुड इन्वेस्ट इन एक्सपांडिंग रोड नेटवर्क्स एंड बिल्डिंग मोर हाईवे. आगे पढ़ते हैं. वाइडर रोड्स कैन अकोमोडेट मोर व्हीकल विच विल प्रिवेंट ट्रैफिक जैम्स एंड मेक ट्रांसपोर्टेशन स्मूथर. तो यहाँ पे देखिए ट्रांसपोर्टेशन ट्रैफिक जैम की बात हो रही है. द डिस्कशन इज अबाउट the main discussion is about how to solve the traffic issue, not
like candidate is not discussing about the fuel price. What would be the effect if the fuel price will go high or will go low? और what would be the effect if fuel price would remain same? यहाँ पे fuel price, the price of the petrol, the cost of the petrol, उसकी कोई discussion ही नहीं है. आगे बढ़ते हैं. Additionally, implementing better traffic management systems such as smart traffic lights and flyovers can significantly reduce waiting times at intersections. तो यहाँ फिर भी ट्रैफिक है. On the other hand, to tackle pollution, the government could plant more trees and create urban green space which can help absorb carbon dioxide and purify the air. Okay, पूरा पैराग्राफ जो है यहाँ पे देखते हैं तो वहां कहीं पे भी इम्पैक्ट ऑफ द प्राइस हाइक ऑफ पेट्रोल कहीं पे भी दिखाया नहीं गया. यहाँ पे जो दिखा है या फिर लिखा है, ओके वोकैबुलरी अच्छी है, आई वुड से इट इज प्रॉपरली जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग है. टास्क रिस्पॉन्स जो है वो 0 हो गया है. ग्रामेटिकल रेंज भी दी गई सब भी है, लेकिन अगर आपका but or however if you are not able to justify your exact topic or the question, the demand of your question, you will be stuck at somewhere 5.5 to 6. You will not get more than 5.5 or 6. तो आपको ये ध्यान रखना है कि proper task response, the demand of the questions, आपको जब भी question दिया जाता है, do not rush to respond. Read it again and again. तो आपको क्या है कि जो रिस्पॉन्स है पता चलेगा. लेट्स से फॉर द प्रॉपर रिस्पॉन्स इसका क्या हो सकता है. जो हमारा क्वेश्चन है, सम पीपल थिंक दैट इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज द बेस्ट वे टू सॉल्व ट्रैफिक एंड pollution problems. So to what extent do you agree or disagree? Proper response can be increasing the price of petrol could help reduce traffic congestion and pollution to some extent by discouraging people from using private vehicles. देखिए यहाँ पे फर्स्ट लाइन पे ही क्या है कि दी कैंडिडेट्स ने एड्रेस कर दिया स्ट्रेट अवे, if the cost of the fuel or petrol would be increasing, would be higher. If the cost would go higher, it will have a direct impact on the people. How they will avoid using their personal vehicles, and while using lesser amount of personal vehicle, it will significantly impact on the reduction of a pollution. तो यहाँ पे क्या है, सीधा टू द टॉपिक जो डिमांड है वो डिस्क्राइब किया है. लेट्स रीड इट अगेन और फर्दर. हायर फ्यूल कॉस्ट would likely encourage individual to opt for alternative modes of transportation such as public buses, trains or bicycle, thereby reducing the number of cars on the road. With fewer vehicle, traffic jam would become less frequent and the emission of harmful pollutants such as carbon dioxide would also decrease. While this measure may not entirely solve this problem, it is the practical steps towards mitigating their severity by promoting more sustainable travel habits. So like it is there के यहाँ पे देखिए पूरा का पूरा पैराग्राफ, the central idea of the whole passage is aligning with the question की जो requirement के उसके ऊपर ही है. तो आप जब भी अगर आपने आपका जो क्वेश्चन है उसे प्रॉपरली जस्टिफाई नहीं किया और आपकी वोकेबुलरी, आपका ग्रामेटिकल सेक्शन या फिर कोहेजन कोहेरेंस परफेक्टली है बैंड 9, फिर भी आपको जो फाइनल आउटकम है आपका, द फाइनल रिजल्ट ऑफ योर IELTS स्कोर कार्ड राइटिंग वुड बी 5.5 to 6 समवेयर. दैट इज व्हाई आई सेड द टास्क रिस्पांस इज द किंग इन दिस सेंस. अगर ये आपने मेंटेन नहीं किया था आपका स्कोर है वो कट जाएगा. Okay, let's discuss about the second cheat code or second secret of getting full score in IELTS writing and speaking specially. तो writing में देखते हैं कि what can be the second most important part. The first one I said the task response is the king. So second one is coherence and cohesion is the queen. अगर राजा है तो रानी भी होनी चाहिए, तो cohesion and coherence is the queen. क्यों? तो यहाँ पे हमें देखना है कि जो हम आइडिया लिखते हैं ऐसा ही निकला कि नंबर ऑफ आइडियाज विल नॉट गिव यू अ गुड स्कोर, विल नॉट like able to grab a good score for you in your writing section or in your speaking section. There is a famous method in IELTS writing and speaking section especially that is called IEE, idea, explanation and example. What you have to do is that first write down the idea, the main idea, main topic sentence, then explain it with some supporting lines, and in last
provide the supportive example. यहाँ पे जो है IEE idea explanation and example is the most important part to maintain your cohesion and coherence. जो एक के साथ दूसरे, दूसरे के साथ तीसरे, लाइंस जो है आपकी लाइंस को अलाइन करनी है, वेल मेंटेन, वेल बैलेंस करना है, एंड लाइक such as for example to exemplify, to illustrate, to explain it more, to explain it deep, जैसे जो वर्ड्स है those are the cohesive devices. तो cohesion and coherence ऐसे ही मैच होगा. Let me give you a simple example. What is the importance of cohesion and coherence in writing or speaking? Let's take an example of some movies. आप जब भी मूवी देखने जाते हो, कोई ऐसी मूवी है जो आपको बहुत पसंद आती है, यू लव टू वॉच दैट मूवी. अब शुरू से एंड तक, इवन यू अवॉइड गोइंग इन वॉशरूम, आप कॉन्स्टेंटली स्पेल बाउंडली मूवी के सामने बैठे रहते हो, पूरा मूवी देखते हो. दैट इज कॉल्ड वेल अलाइंड, कोहेसिवली, परफेक्टली अलाइंड मूवीज. मीन्स के ऐसी आइडिया, द डायलॉग, द स्टोरी इतना वेल मेंटेन होता है कि रीडर जो है या वॉच जो ऑडियंस है, ऑडियंस को स्पेल बाउंडली वो होल्ड कर सकती है. So that is called the perfect way. जैसे कि हमारी दादी की कहानियां, जब दादिया, ग्रैंडमदर यूज्ड टू से अस लाइक इन्फॉर्म अस स्टोरीज और नैरेट स्टोरी, तो हम क्या के सुनते रहते, होता कुछ नहीं है, लेकिन द वे दे एक्सप्लेन समथिंग, the way they deliver the idea is the most important. It holds the reader or the listener spellboundly. तो आप जब भी आपका रिस्पॉन्स लिखो या फिर प्रिपेयर करो, IEE इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. नाउ डिस्कस अबाउट द नंबर ऑफ आइडियाज. लाइक आपका जो बॉडी पैराग्राफ है फर्स्ट एंड सेकंड, तो एक बॉडी पैराग्राफ में लाइक वन आइडिया explanation and example is sufficient to get about 6, 5 to 7. And if you are looking for 8 plus, then 2 idea, 2 explanation and example. That means like अगर आप 6.5, 7 के आसपास कहीं फाइट कर रहे हो, write down the idea perfectly, support or provide some supportive sentences to describe or illustrate your idea, and provide in a last provide the example. मीन्स आइडिया, एक्सप्लेनेशन एंड एग्जाम्पल. अगर एक लिखा है तो, अगर 2 लिखे आपने तो that will be enough to get you 7, 8 or even 8, 5 or perfect 9. So let's check the example. Proper and improper response क्या होता है? Let's check the example. जो सेम क्वेश्चन है यहाँ पे, the price of petrol can be increased and people will use buses or bicycle. कुछ अलाइनमेंट, पहली आइडिया यहाँ पे आई है और देखिए, ट्रैफिक जाम will stop and carbon dioxide emission will be less. कुछ first idea, the price of petrol can be increased and people will use buses or bicycle. The first idea. Then suddenly जो writer है यहाँ पे jump हो गया, traffic jam will be reduced or will stop and carbon dioxide emission will be less. तो एक आइडिया से सीधी दूसरी आइडिया पे जंप हो गया, ना कि फर्स्ट आइडिया जो लिखी गई है, the price of petrol can be increased and people will use buses and bicycle, उसे एक्सप्लेन नहीं किया है. क्या, हाउ. जब भी रीडर के माइंड में कभी क्वेश्चन होगा, हाउ, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हिच, ये सारे अगर क्वेश्चन आए रीडर के माइंड में, क्लैरिफिकेशन नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, दैट मींस यू विल गेट ओनली 5 to 5.5. So let's read further. This is important because private vehicles are expensive to run and pollution comes from car. Pollution comes from car. Improper vocabulary again. With fewer cars on the road, traffic will be reduced. कुछ लाइक अलाइनमेंट नहीं है, आइडिया एंड आइडिया एक के साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा, अलाइनमेंट नहीं हो रहा है. फर्दर, द एनवायरनमेंट कैन बी क्लीनर एंड मोर पीपल विल टेक ट्रेन्स और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन. हायर फ्यूल कॉस्ट विल चेंज हाउ पीपल ट्रैवल एंड देयर विल बी लेस कंजेशन. तो यहाँ पे क्या है कि आइडिया ही दिया है, जस्ट देयर आर नंबर ऑफ स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट भी क्या है कि एक दूसरे के साथ अलाइन नहीं है, पहला, दूसरा, तीसरा, लाइक कभी पोल्यूशन, कभी व्हीकल, कभी प्राइस, कभी पोल्यूशन, कुछ ना कुछ क्या कि यहाँ पे गैप है, मिसिंग है, एंड इससे ऐसा अगर रिस्पॉन्स होगा you'll get only 5. Let's check the proper way of presentation, idea, explanation and example. Like the proper response is that increasing the price of petrol can significantly reduce traffic congestion and pollution by discouraging excessive use of private vehicle. ये था हमारा idea, that the idea is increasing the price of petrol can significantly reduce traffic congestion and pollution by discouraging excessive use of private vehicles.
आइडिया अभी उसे क्या है कि नैरेट किया गया है। द एक्सप्लेनेशन इज दैट व्हेन फ्यूल बिकम्स मोर एक्सपेंसिव, यहाँ पे लिखा है कि इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ पेट्रोल, तो उसे पैराफ्रेज किया, व्हेन फ्यूल बिकम्स मोर एक्सपेंसिव मेनी इंडिविजुअल्स आर लाइकली टू स्विच टू पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन एंड कारपूलिंग टू सेव मनी। कारपूलिंग एक सा वर्ड है लाइक शेयरिंग टैक्सी, बरोबर। कारपूलिंग इन द सेंस के लाइक मेरे नेबर्स के पास टैक्सी है या कार है, तो मैं उसके साथ एक दिन जाऊंगा, मेरी कार में आएगा कभी, सो दैट इज कॉल्ड द कारपूलिंग। सो this shift would lead to fewer cars on the road, resulting in smoother traffic flow and reduced congestion during peak hours. तो यहाँ पे क्या किया, पहले आइडिया डाली, अभी उसको मैंने लाइक एक्सप्लेनेशन दिया है, एंड देन द एग्जांपल, फॉर एग्जांपल टू एक्सप्लेन टू इलस्ट्रेट सच एज लाइक, यहाँ पे कोहेसिव डिवाइस हो गया। फॉर एग्जांपल, countries like Singapore have implemented high fuel taxes alongside efficient public transport systems, successfully minimizing road traffic. So that is the perfect way of presentation. First, provide the idea statement, explain it in a brief कि वो जो आपका statement है exactly what does that stand for, what does that mean for, and provide the example. The next cheat code or the secret tips for IELTS to get a good score is have a mixture of simple, compound, and complex sentences. In this sense, you have to maintain the range of grammar. Range of grammar, that means कि you are not supposed to use only and only the jumble of only and only the complex sentences. That means कि आपको एग्जामिनर को ये आपकी जो स्किल है दिखानी है, that you know the grammar well with accuracy. या grammar तो चाहिए, variety of sentences we have to represent in terms of the simple sentences, compound sentences and the complex sentences. Not only complex sentences or not only compound or not only simples are sufficient to get a good score. अगर आपने ऑनली कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस दे दिए, सारा का सारा आपका मान लो कि मेंटेन किया है आपने, लाइक रेंज ऑफ वोकैबुलरी, लाइक प्रॉपर ग्रामर, इवन द टास्क रिस्पांस इज देयर, बट अगर आपने एक ही टाइप के सेंटेंसेस दिए, देन स्टिल यू विल गेट, यू विल बी स्टक समवेयर एट 5.5 और 6, उससे ज्यादा आपको स्कोर नहीं मिलेगा। तो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू मेंटेन द रेंज ऑफ ग्रामर, दैट मींस मिक्सचर ऑफ सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। लेट्स से फॉर द एग्जांपल improper क्या है कि यहाँ पे जो एग्जांपल दिया गया वहां पे क्या है, ओनली एंड ओनली सेम टाइप ऑफ सेंटेंसेस है। फॉर एग्जांपल, द प्राइस ऑफ पेट्रोल कैन बी इंक्रीज्ड, सिंपल सेंटेंस, this will make people use car less, again same, this will use buses, like they will use buses and trains more, there will be fewer cars on the road, traffic will be less, the air will also have less smoke, this will make air cleaner, people will stay healthier. Singapore has high fuel price. There are fewer cars on the road there. So reason is that like a simple continuous sentences है, okay, vocabulary है, range है, like accuracy भी है, कोई error नहीं है, फिर भी अगर आपका ऐसा रिस्पॉन्स है, you'll get only 5 to 5.5 maximum, उससे ज्यादा नहीं मिला। But if you are able to maintain the range, let's say for example the mixture of simple, compound and complex sentences, for example, increasing the price of petrol can help reduce traffic and pollution. It is a simple sentence with the use of like a common connector. And second sentence, like when petrol price rise, people are less likely to rely on private cars and may choose public transportation or carpooling instead. So simple sentence शुरू किया, then compound, and let's check that like this shift can lead to fewer vehicles on the road, reducing congestion, especially during peak hours. Complex. So simple, compound, and complex. For instance, for example, in Singapore, where fuel prices are deliberately kept high, the number of private cars is limited and public transport is widely used. So again, complex. Additionally, fewer cars mean lower emission of harmful gases like carbon dioxide, which improves air quality and benefit public health. By making petrol more expensive, governments can encourage sustainable travel habits that address both traffic and the pollution problem complex. This way, आपको क्या करना है, आपका जो बॉडी पैराग्राफ है, बॉडी पैराग्राफ में और थ्रू आउट योर होल ऐसे और इवन योर स्पीकिंग पार्ट, you have to use the mixture of sentences, not only same kind of sentences, because there is a myth in students. Majority of students are having a myth कि अगर हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ज्यादा यूज करेंगे विल गेट अ हाई बेंच स्कोर, और लास्ट में रिजल्ट आता है 5.5, 6. So same type of sentence will not help you to increase your score. Rather than, I would advise the most efficient way of getting a bench score 8+ in IELTS writing and speaking is to use the mixture of simple, compound and complex sentences.
The next cheat code is fancy and excessive use of synonyms is not mandatory. That means कि there is a myth in like a most student that अगर हम same kind of word use करेंगे तो score कटेगा. हाँ, when you are writing on a specific topic that we are talking about a petrol, so we have to use petrol repeatedly. अगर repeat नहीं किया तो petrol का क्या हो सकता है? नो सॉल्यूशन. तो ऐसे वर्ड्स हम यूज करेंगे रिपीटेडली. लेकिन इम्प्रॉपर, इररिलेवेंट सिनोनिम्स की गेम में अगर पढ़े तो हमारा स्कोर पक्का कटना ही है, कट ही जाएगा. एग्जामिनर इज असेसिंग द लेवल ऑफ योर नॉलेज इन टर्म्स ऑफ लेवल ऑफ लिंग्विस्टिक एबिलिटी, योर वोकेबलरी स्पेशली. वोकेबलरी हमें कैसी यूज करनी है? वोकेबलरी सिनोनिम्स नहीं, सिनोनिम्स चाहिए जहां टॉपिक के रिलेवेंट सपोर्टिव फॉर्मल सिनोनिम्स है, फॉर्मल वोकेबलरी है, वो ही हम यूज करेंगे. कैसे वर्ड्स हो गए तो उसके रिलेटेड मैंने 3-4 वीडियो रिसेंटली हमारे यूट्यूब चैनल में अपलोड किए हैं. आप वो चेक कर सकते हैं कि वोकेबलरी कैसी होनी चाहिए. व्हाट काइंड ऑफ वर्ड्स आर सफिशिएंट इनफ टू गेट 8+ इन IELTS राइटिंग एंड स्पीकिंग. तो वोकेबलरी यहाँ पे क्या है? ओनली सिनोनिम्स आर नॉट इंपॉर्टेंट. और सिनोनिम्स एंड सिनोनिम्स, कैसा भी वर्ड, कोई भी लाइन हो, कोई भी आइडिया हो, कोई भी टॉपिक हो, कहीं पे भी कुछ भी वर्ड सिनोनिम्स मिला, घुसा दिया, स्कोर नहीं आएगा, कट जाएगा. The examiner is going to chop down your score if you use or if you misuse the improper and number of like irregular, or I would say like कुछ भी ना हो, like synonyms ही डाल दिया तो ऐसे स्कोर नहीं आएगा. आपको उसकी जगह यूज करना है वेराइटी, लाइक जो एक बैंड डिस्क्रिप्टर है, that is called a lexical resources. Lexical resources in the sense we have to use a range of vocabulary in terms of noun, verb, adverb, adjectives, participle, gerunds. ऐसे वर्ड्स हमें यूज करने हैं. और लाइक सिनोनिम्स चाहिए तो फॉर्मल चाहिए हमें, नहीं कि इनफॉर्मल कुछ भी डाल दिया, ऐसे नहीं है. लेट्स चेक आउट द एग्जांपल विथ improper, like a kind of repeated vocabulary. Like increasing the price of petrol can help reduce traffic and pollution. When petrol price go up, people will use cars less and use buses more. This will be fewer cars on the road and traffic will be less more repeated. Fewer, so fewer car will also reduce pollution because there will be fewer cars. The air will be cleaner because there will be fewer cars. Singapore has high petrol prices. In Singapore there are fewer cars because petrol prices are high. This can help reduce traffic. तो ऐसे यहाँ पे क्या क्या रिपीटेड वर्ड हो गए तो स्कोर कटेगा. इसकी जगह आपको बेटर रिस्पॉन्स, लेट्स चेक द बेटर रिस्पॉन्स इन टर्म्स ऑफ लाइक प्रॉपर टॉपिक रिलेटेड काइंड ऑफ नाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव्स, पार्टिसिपल, gerund and formal vocabulary is that raising the price of petrol. Okay, increasing or raising, participle आ गया, present participle. Raising the price of petrol could significantly alleviate, significantly adverb डाल दिया, alleviate traffic congestion, solve the issue. Okay, can reduce the issue. So alleviate traffic issue, traffic congestion, and reduce environmental pollution, environment problem, environmental pollution. As fuel cost increase, if fuel cost go up, so is fuel cost increase. Individuals are likely to reconsider the reliance on private vehicle. Reliance, that means dependency on something, to be having a dependency on someone or something. So reliance on a private vehicles, opting, selecting, preferring, opting instead for more sustainable alternatives like public transportation, cycling or carpooling. Okay, so like sustainable alternative, there is a shift would result in, the shift will था तो यहाँ पे क्या कहते हैं, this shift, the change, the shift would result in noticeable decrease. Okay, it will decrease, simple sentence. So like उसको vocabulary with the shift would result in noticeable decrease in the number of vehicles on the roads, leading to smoother traffic flow. It will increase the traffic issue, number of vehicles, so like leading to smoother traffic flow and shorter commute time. Okay, so commute, traffic flow, like for instance cities such as Singapore. So for example Singapore has something, तो यहाँ पे लिखा for instance cities such as Singapore have successfully implemented adverb implemented high fuel taxes which have curbed, which has reduced, like curb means के किसी को control कर देना, completely remove कर देना, which have curbed car ownership and promoted the use of efficient, eco-friendly public transportation. Efficient and eco-friendly. So ऐसे यहाँ पे अगर हम words use करेंगे
topic related variety of verbs, nouns, adverb, adjectives, participles and gerund, तभी जाके हमारा जो स्कोर है वो अप होगा, वरना वोकेबलरी में हम स्टक रहेंगे, फॉर जो सिनोनिम्स की गेम है उसी में फंसे रहेंगे, और कितना भी रिपीटेशन होगा आइल्स एग्जामिनेशन का, हमारा स्कोर 2025 में पक्का आना ही नहीं है, क्योंकि अभी आइल्स इज चेकिंग each and everything more accurately, more properly, and they have set some benchmark more stricter. The next part is the most important again, that like advice is that never write example in a single sentence. आप जब भी example दे रहे हो तो उसे एक like for example something करके छोड़ने लगे. For example, Singapore has implemented the same policy which has helped to reduce the pollution. ऐसे single sentence में हम example नहीं देंगे. Let's say for example like raising petrol prices can reduce traffic pollution. ये हमारी आइडिया थी. फिर एग्जाम्पल सिंगापुर हाई फ्यूल टैक्सेस हैव हेल्प रिड्यूस ट्रैफिक कंजेशन एंड पॉल्यूशन. तो क्या है कि जो रीडर है उसे कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं मिल रहा है यहाँ पे, जो आप क्या कहना चाहते हो एग्जैक्टली हाउ, वो यहाँ पे पॉइंट जो है क्लियर नहीं हो रहा. रादर देन लेट्स चेक द प्रॉपर रिस्पांस. लाइक फर्स्ट जो है हमारी आइडिया है, आइडिया इज raising petrol prices can reduce traffic and pollution. ये हमारी आइडिया थी कि like prices of petrol, if we increase the cost of price, it will help to reduce traffic and pollution. उसका explanation हमने दिया है. High petrol prices often discourage people from using private vehicle, leading to fewer cars on the road. This reduction traffic can alleviate congestion and lower pollution levels, as there will be fewer emissions from the vehicles. ये था हमारा explanation. Now check the example कैसे दिया जाता है. For instance, for example, to explain, to illustrate, Singapore has implemented high fuel taxes as part of its strategy to limit car ownership and promote efficient public transportation. As a result, the country has managed to reduce traffic congestion and improve air quality, making it a global model for sustainable urban planning. वहां पे हमने देखा था सिर्फ एक ही सेंटेंस था, सिंगापुर हाई फ्यूल टैक्सेस हैव हेल्प रिड्यूस ट्रैफिक कंजेशन एंड पॉल्यूशन. लाइक रीडर के माइंड में कोई आइडिया क्लियर होती नहीं, तो दैट वे यू विल हैव टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी एग्जांपल इन लेंथ, इन सम रिलेवेंट और एडिक्वेट लेंथ और इन दैट. अदरवाइज आप 5.5 6 पे ही कहीं पे स्टॉप हो जाएंगे. ओके, लास्ट पॉइंट. ये जो पॉइंट है मैंने लास्ट में रखा इसीलिए क्योंकि ये जो है ना मोस्ट इंपोर्टेंट है. अभी हमने जो देखा है कि लाइक ग्रामेटिकल रेंज चाहिए हमें, लाइक वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस चाहिए, हमारा टास्क रिस्पॉन्स अच्छा होना चाहिए, या फिर एग्जांपल एंड एक्सप्लेनेशन एंड एवरीथिंग हमने जो देखा उन सभी से ऊपर बियॉन्ड दैट द मोस्ट इंपोर्टेंट जो मैं यहाँ पे आपको द सीक्रेट ऑफ आइल्स फॉर ईयर 2025 इज अभी दिखा रहा हूँ. जिन जिन लोगों ने पूरा वीडियो देखा उन्हीं लोगों के लिए ये है गिफ्ट. अ बोनस पॉइंट इज ग्रामेटिकल एक्यूरेसी. बिफोर यू मेंटेन एवरीथिंग, अगर आपने सारा का सारा जो भी रिक्वायरमेंट है फ्रॉम द बैंड डिस्क्रिप्टर आपने सारा मेंटेन किया, अगर आपकी ग्रामेटिकल एक्यूरेसी मेंटेन नहीं हुई है तो आप 6 से ज्यादा कभी भी आगे नहीं बढ़ोगे. स्पीकिंग हो या राइटिंग हो, ये आप नोट कर लीजिए. द मोस्ट इंपॉर्टेंट trick, or I would say the most important part in IELTS writing and speaking is to maintain your grammatical accuracy. First, try to maintain your grammatical accuracy, then try to maintain the range. रेंज आपने कितने भी डाली, कैसे भी ग्रामेटिकल, लेकिन आपके टू बी फॉर्म है या फिर वर्ब फॉर्म है या फिर आपके मेन वर्ब है, लाइक बेसिक ग्रामेटिकल रेंज है, उसमें अगर एरर आई, कहीं ईज का आर कर दिया, एस मेंटेन नहीं किया, आईएनजी मेंटेन नहीं किया, कुछ भी आपने अगर बेसिक एरर डाली, आपका स्कोर 6 से आगे नहीं आएगा, दैट इज गारंटी. सो व्हाट आई वुड एडवाइज इज बिफोर मेंटेनिंग एवरीथिंग यू हैव टू फोकस ऑन योर बेसिक ग्रामर, क्योंकि आइल्स में एग्जामिनर को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है. द एग्जामिनर्स आर गेटिंग इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द सुपीरियर अथॉरिटी दैट आपको असेसमेंट सिर्फ 2 ही बेंचमार्क से करना है. द 2 बेंचमार्क्स इज, द फर्स्ट क्वेश्चन इज कैंडिडेट मेकिंग any basic grammatical related errors. जो अगर आंसर यस है, क्वेश्चन सीधा है, यहाँ पे पूछा है लाइक एग्जामिनर्स को इंस्ट्रक्शन दिया गया कि क्या कैंडिडेट बेसिक ग्रामर में एरर कर रहा है. अगर आंसर यस है, यस टू बी में एम इज आर, वाज वर, विल शैल, ईडी, ई, आईएनजी जो भी है, एस जो भी अगर बेसिक एरर है तो एग्जामिनर को क्लियर इंस्ट्रक्शन है. द इंस्ट्रक्शन इज डू नॉट गिव more than 6 in any condition.
दैट मीन्स कि अगर आपकी थोड़ी बहुत भी बेसिक ग्रामर में एरर होती है, आपको 6 बैंड से ज्यादा कभी 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 नहीं मिलेगा। नेवर एवर यू विल बी एबल टू गेट मोर देन 6। सो योर प्रायोरिटी इज, और सेकंड इज दैट, जो क्वेश्चन है दूसरा वो है कि अगर नहीं है, इज कैंडिडेट मेकिंग एनी बेसिक ग्रामेटिकल एरर, नो है, तो आपका जो असेसमेंट है विल स्टार्ट फ्रॉम 6 जैसे लाइक रेंज ऑफ वोकेबलरी, रेंज ऑफ ग्रामर, आपका कोहेजन कोहेरेंस है, टास्क अचीवमेंट है, रिस्पॉन्स है, जो भी है, तो उसके अकॉर्डिंग 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5 या 9 तक आपका स्कोर इजीली पहुंच जाएगा। लेकिन अगर आपकी ग्रामर में बेसिक एरर है, बेसिक ग्रामर में कुछ ना कुछ आपने लोचा मारा है, कंफ्यूजन है, देन योर असेसमेंट विल नॉट रिच बियॉन्ड 6। 6 वुड बी दी कैप, आपके ऊपर कैप लगती है। तो ये बात याद रखिए, आप कुछ भी करो लेकिन आपकी बेसिक ग्रामर में एक्यूरेसी मेंटेन कीजिए, आपकी बेसिक ग्रामर की फ्लुएंसी मेंटेन कीजिए। उसके सिवा आपका स्पीकिंग एंड राइटिंग में 6 से ज्यादा स्कोर लाना, मोर देन 6 इन स्पीकिंग एंड राइटिंग, इम्पॉसिबल है। तो ये सभी बच्चों के लिए जिन लोगों ने लास्ट तक ये वीडियो देखा, और आपको अगर बेसिक ग्रामर की फ्लुएंसी मेंटेन करनी है, तो मैंने उसके रिलेटेड ग्रामेटिकल रेंज में क्या बेसिक टेंसेस सारे के सारे, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, एक्टिव पैसिव एंड एवरीथिंग, सारे के सारे वीडियो मैंने डाले हुए, पूरा एक सेक्शन ही दिया हुआ है। आप देखिए, प्रैक्टिस कीजिए और आपकी रेंज जो है इंप्रूव कीजिए। ओके फ्रेंड्स, सो दैट वाज द चीट शीट फॉर आइल्स तो अपीयर इन ईयर 2025। अगर आप इस साल में आइल्स दे रहे हैं, तो ये सारी बातों का आप कंप्लीटली बिना अवॉइड किए, बिना नेग्लिजेट किए गए, आप ये सारी बातों का परफेक्टली ध्यान रखिए। और अगर आपको असेसमेंट चाहिए, इफ यू आर लुकिंग टू चेक योर रिस्पॉन्सेस असेसमेंट, you can contact me personally. I will help you to provide the assessment and feedback on your writing and speaking. Thank you so much being with us. And अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल आर इंटरनेशनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, तो प्रेस कर दीजिए। एंड see you in the next video for that kind of surprise tips and techniques.